ਵਿੱਚ ਪਾਲਵੀਂ ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਜੰਮੀ ਪਾਲਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਗ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਵੀਂ ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਈਰਕਾਤ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਜਗ ਦੇ ਮੁਕਾਏ ਜਾ ਈਰਕਾਤ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਜਗ ਦੇ ਮੁਕਾਏ ਜਾ ਬਨ ਮਿਤ ਮਾਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਬਨ ਮਿਤ ਮਾਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਜਗ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪ ਸੱਚਾ ਔਰ ਨੂੰ ਜਪਾ ਲਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਗ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਵੀਂ ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਜੰਮੀ ਪਾਲਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਗ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਵੀਂ ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਜਨ ਜਨ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜੇਰਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਨ ਜਨ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜੇਰਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੈਸਾ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸੁਨੀਦਾ ਜੈਸੋ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸੁਨੀਦਾ ਸੋਈ ਮੈਂ ਜੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਸੋਈ ਮੈਂ ਜੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਦਰ ਕਾ ਵਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਰਿ ਦਰ ਕਾ ਵਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਹਰਿ ਰਾਰੇ ਰਾ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਹਰਿ ਰਾਰੇ ਰਾ ਖਾਤੇ ਹੋ ਮੇ ਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਖਾਤੇ ਹੋ ਮੇ ਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਸੰ ਜੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਸੰ ਜੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਧੰਨ
राधा संतों की वाणी वाणी कभी कभी इनका काम दीन गरीबी बंदगी साधन से आदीन दीन गरीबी बंदगी साधन से आदीन ताके संग मैं यो रहूं जो पानी संग मीन जो पानी संग मीन। ये परम संत सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Kabir Sahib. तो कहते हैं कि जो भगत की भक्ति बहुत श्रेष्ठ है और हम हमेशा भक्ति की महिमा करते आए हैं। सब संत मत जो है वो भक्ति का ही मार्ग है। He talks about the greatness of devotion, and all that we are all doing is all part of that devotion. इसमें जप तप तीरथ व्रत उपवास प्राणायाम अष्टांग योग ये सब कठिन साधन करने की जरूरत नहीं है। सहज योग शुद्ध शब्द अभ्यास संत हमें देते हैं। Saints give us the practice of Surajshab Yoga. In this practice, there is no need to do difficult austerities or go into the jungles or do any difficult pranayams, etc. It's a very simple practice which is given to us by the saints. जो कि जंगल पहाड़ों में जाना, बैराग अवस्था लेके संन्यास लेके फिर भिक्षा मांग के खाना, तो फिर कर्म ही इकट्ठा करना हो गया। क्योंकि भिक्षा मांगते हैं वो कर्म ही होता है, चाहे 1 पैसा मांगो चाहे 1 लाख मांगो, जो मांगते हैं उसे देना पड़ता है। When we sacrifice our homes and go outside in the mountains or the forest and we go house to house asking for alms as a part of the practice, that is in a way adding to your karmas, because when we are taking from others, we are adding to our karmas. तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपने सत्सों की कमाई मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की वजन बर्दाश्त करो, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। So saints say that they insist on honest livelihood with your hands. They insist that we have an honest livelihood. We earn honestly. When there are visitors in our house, we should afford hospitality to them, and we should do our devotion. This is what the saints tell us to do. पहले जमानों में साधु जो सन्यासी थे मानते थे, लेकिन कितना मानते थे? जो सच्चे महात्मा हैं वो उतना ही मानते जितना एक टाइम के लिए जरूरी होता है। एक टाइम के लिए 1 कर या तो 2 कर, अगर मिल गया तो वापस आके बना के खा के मालिक की भजन करते। तो जिसका वो खाते थे उसका भी भला होता था और इनका भी भला होता था। In the earlier times, when sadhus would go and ask for alms and would seek food from others, they would only take as much as was required for a meal. And when they got that much, they would go back and eat that or cook and eat that food, and then they would spend the time doing their devotion. By doing so, the person who would donate to them, he would also gain by their devotion, and they would also be able to spend more time doing the devotion. और कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। कहते हैं बगैर मांगे अगर आप उस मालिक की याद में बैठे हो तो लोग प्रेम प्यार से जो 10,
50, 100 देते हैं वो जायज है, क्योंकि हम उसमें मानते नहीं। हम वो भी जो प्रेम से देते हैं उसमें उनकी कोई लगाव ज्यादा नहीं होता है। अगर आप मानते हैं 1 पैसा भी देना है तो उनके मन में वो भाव देने का आता नहीं, और बार बार मांगने से देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये अलग है वो अलग हो जाता है। ये निस्वार्थ माने हम मांगते नहीं। प्रेम से अगर कोई देता है 10 पैसे 20 पैसे या जो 1000 2000, तो वो जायज है साधु संतों के लिए। When we sit, when the Mahatmas sit for their devotion, when they have not asked anyone also, it is said that if you ask, you may not get any alms, but if you don't ask and do selfless devotion, then you will get everything. So, like that, when they sit for devotion, if someone gives them some food or gives them some donations, that is also not a very heavy burden, because a person giving so without having been asked anything to be given, he is giving it quite selflessly, and therefore the burden of karmas is not so much as when someone asks the other person to give something. So when you ask even for 1 paisa, it becomes a burden, because then he has to take it out because of your request. So there is a big difference between asking and taking as a donation and someone giving out of his own will, a selfless donation. इसीलिए कबीर साहब कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। आप मत मांगो, मालिक के भक्ति से जुड़े रहो, अपनी ड्यूटी पे जाते रहो। प्रेम से वो लोग आपको प्रेम से उससे कहीं 10 गुना ज्यादा देके जाएंगे। So Kabir Sahib says that if you don't ask, and you do the devotion of God Almighty, you will get pearls. But if you ask while you are doing that devotion and you ask others, then nobody will even give you a small offering. तो कहते हैं जो भी सेवा चढ़ावा आता है महात्मा कोई परोपकार में लगा देते हैं। हाँ, बरस में 2 बरस भंडारा करते 6-6 महीने में, और फिर वहाँ पे लोगों के रहने के लिए व्यवस्था बना देते हैं। तो वो व्यवस्था जो भी हाल बनाते हैं, कमरा बनाते हैं, उसमें लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो पुण्य उसको मिलता है जिसका पैसा उसमें लगा है। When we offer selfless donations, then the Mahatmas are not using it for themselves. They are using it for the Sangat when there are bhandaras, or when for doing some construction of a building or a hall. And when people or disciples come and they do the meditations using that infrastructure, then the benefit is also shared by those people who have given those donations. तो कहते हैं कि उससे उनका धर्म सार्थक हो जाता है, और अपने स्वागत के लिए संत कोई न कोई खेती है, कोई व्यवस्था करके ही रहते हैं। So that way, when someone gives donation, he also purifies his earning. When saints never rely on these donations for their own livelihood, they always have their own source of income, which takes care of their own needs. तो वही कबीर साहब जी सारा देते हैं कि दीनता और नम्रता, बंदगी, और कहते हैं कि प्रेम प्यार लेके अगर जो भक्ति करता है तो मैं उसके साथ इस तरह से रहता हूँ, जो दीनता नम्रता लेके भक्ति करता है, जैसे पानी के साथ मीन रहती है, वो परमात्मा कहता है मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। Kabir Sahib says that God Almighty says that when the devotee does his devotion with love and affection and all humility, then God Almighty stays with him like a fish in the water. अपने आप को सबसे छोटा समझता है, लोगों को बड़ा माने और सबकी इज्जत करे, सबसे प्रेम प्यार से बोले, मालिक का भजन सुमरन करे, तो मालिक उसके साथ हमेशा रहता है। So when someone does the devotion, he comes and does the devotion, he is humble and he greets everyone also humbly, and he goes about doing his simran and his bhajan and dhyan.
then God Almighty also is always there with him. जहाँ अहंकार है, क्रोध है और राग द्वेष है, वहाँ वो भक्ति और वो परमात्मा वहाँ से दूर हो जाता है. Where there is anger or there is greed or there is envy, there God Almighty distances himself from that. दीन लखे मुख सबन को, दीन ही लगे न को, दीन लखे मुख सबन को, दीन ही लगे न को, भली बिचारी दीनता, नरहु देवता होय, नरहु देवता होय. तो वही कबीरदास जी सलाह देते हैं, ये दीनता नम्रता बहुत बड़ी चीज है और दीनता नम्रता हमारे भक्ति का मुख्य अंग है. और जब तक हम दीन आधीन होकर के परमात्मा में आगे नहीं बढ़ते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो भक्ति पूरा नहीं होता. Kabir Sahib says that devotion with all humility is of very high order. We should be humble and polite in our behavior and in our devotion, and we should be surrendering in our devotion. कहते हैं जैसे दीनता नम्रता वाला प्रेमी सबसे मिलता है, सबको देखता है, सबसे प्रेम करता है, लेकिन जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, पैसे का, धन का अहंकार, मान बढ़ाई का अहंकार, ओहदे का अहंकार, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने लेवल के लोगों की तरफ भी देखते हैं, छोटे की तरफ नहीं देखते. Where someone is humble and he is polite in his behavior, when he comes for a program, he equally is polite with everyone and he greets everyone equally with equal politeness. Where people are carried away by their ego or their status or their wealth, then they only exchange salutations with people they believe are of equal wealth or equal status, and they don't like to mingle or talk to others whom they believe are inferior. तो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा सुमरन भजन ज्यादा बनेगा होगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर दीनता नम्रता आएगी. ये भक्ति का मुख्य देन है. अगर अहंकार आता है तो अभी हमारा भजन ठीक से नहीं चल रहा है. अगर सच्चा प्रेम प्यार से हम मालिक को समर्पित होकर भजन सुमरन करते हैं, तो जरूर हमारे अंदर दीनता नम्रता आएगी. हम सबसे प्रेम और प्यार करेंगे. When we do our bhajan simran, we do our devotion, then automatically the trait of devotion is to imbibe the quality of humility and politeness. That automatically comes, and we automatically deal with everyone with humility, and we are polite with everyone. If we are not polite or we are not having that humility, then we should understand that we are not doing the right devotion. Our bhajan simran is not working. अहंकार विनाश का कारण है. एक अहंकार ये मैं मेरा, जो आज हमें 84 के जेल खाने में भटकाता है, और दीनता नम्रता से भरी भक्ति हमें इन अहंकार 84 से छुड़ाता है. It is the ego which brings us again and again in the ocean of life and death. And it is the reason for us to go in and suffer in that 8.4 billion life forms. And it is humility and politeness which takes us out and gets us salvation. आप देखेंगे साधु संत महात्मा परिपूर्ण होते हैं, आप लेकिन सबके आगे पहले ही हाथ जोड़ते हैं, सबके आगे सिर झुकाते हैं. वो ये नहीं देखते हैं कि वो मुझे नमस्कार करे फिर मैं नमस्कार करूं. जो भी सामने आवे वो
छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो धनी हो, अपना हो पराया हो, महात्मा सबको हाथ जोड़ के पहले ही नमस्कार करते हैं। You will observe that saints always meet and greet everyone with folded hands, and they do not distinguish between people. They always fold their hands and greet everyone, whether it is a big person or a small person, whether it is a family member or an outsider, whether someone is rich or someone is poor. They always greet everyone with folded hands. They don't wait for the other person to first fold his hands and then to greet him. Instead, they always greet with folded hands before. क्योंकि उनकी दृष्टि आत्माओं के ऊपर होती है, मन के शरीर के ऊपर नहीं। जो दोष है वो मन में होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा परमात्मा की बेटी है, ये निर्मल है, पवित्र है। They always see the soul in everyone. They do not pay attention to the mind and its filth and whatever burden it is carrying, because the soul is very pure and the soul is the daughter of God Almighty. They always have their attention at the soul. तो वो सब आत्माओं की तरफ देख के सबको एक निगाह से, एक दृष्टि से देखते हैं, सबके ऊपर एक समान दया न्याय करते हैं। They see all the beings and they see the souls in everyone, and that is how they see everyone equally. एक बानी जो दीनता संतन किया विचार, एक बानी जो दीनता संतन किया विचार, यही भेंट गुरुदेव की, सब कुछ गुरु दरबार, सब कुछ गुरु दरबार। फिर कबीर साहब जी कहते हैं, अगर आप संतों को कुछ भेंट करना चाहते हैं तो उनको कौन सा पुरस्कार दो? तो कहते हैं दीनता नम्रता। दीनता नम्रता का पुरस्कार दो, संत खुश होते हैं। आप दीनता नम्रता लेके छोटे से छोटे बन के दुनिया में चलो, भक्ति सुमरन भजन करो, तो इससे संत बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाकी सब उनके दरबार में है, यही एक नहीं है। इसीलिए संतों को उसी की जरूरत है। अगर आप कोई उपहार संतों को देना चाहते हैं तो दीनता नम्रता का उपहार दें, संत खुश होते हैं। Kabir Sahib says that if there is a gift that you want to give to your master, if there is something you want to give him to please him, then you should shower humility and politeness. You should go about your life with humility and politeness and do your bhajan simran, because that is what they like the most. They have everything possible in this creation with them. If there is something that they look in for others, is humility and politeness. अपने आश्रम में जब हम सेवा में थे, बाबा सोमनाथ महाराज जी के समय की बात है, तो बाबा जी हमेशा सत्संग में कहते थे, सवेरे उठते ही जब तुम बाहर निकलते हो तो जो भी सामने आता है उसको हाथ जोड़ के पहले राधा स्वामी बोलो। इससे क्या होता है कि अपने अंदर दीनता नम्रता आती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, वो गरीब है या अमीर है, ये मत देखो। कोई भी सत्संगी आता है उसको पहले तुम ही नमस्कार करो। When I was in the ashram, in Baba Somnathji's ashram, he used to always say that when you get up in the morning and you come out of your room, then whoever first meets you, you should always with folded hands say Radha Swami and greet him. Don't wait for him to say anything. First you fold your hands and you say Radha Swami to him. Because by doing so, you are imbibing that quality of humility within yourselves. In the morning, the first thing you do is you imbibe that quality of humility.
And then whenever you meet anybody, you always with folded hands take with folded hands say Radha Swami to him without waiting for them to say that to you. लेकिन कुछ लोग बड़े लोग थे, बॉम्बे के थे, दावणगिरी से आते थे, कोई कर्नाटक, तो बड़े बड़े जो लोग थे उनको आदत थी कि हमारे छोटे लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार करने में अपना इंसल्ट समझते थे, मालूम नहीं ये तो वो हम लोग जब रास्ते में बोलते थे ऐसा मुड़ी हिला के चले जाते थे. So many times some people from Mumbai and some people from Davangiri and other places, they somehow felt that it was below their esteem or dignity to say Radha Swami with folded hands, because whenever we would say Radha Swami to them, then they would just nod their head. So somehow they felt possibly insulted to fold their hands and say Radha Swami in return. बड़ों में भी तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, सब उनमें से बहुत लोग राधा स्वामी बोलते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि छोटों को राधा स्वामी करना नाजायज समझते थे. तो एक दिन बाबा जी ने एक बार दो बार बोला, बाद में एक दिन सत्संग में गुस्सा किया, नाम लेके उन लोग को बोला, तुम लोग क्या समझता है, हाँ वो लोग सत्संगी सामने आता है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, उनमें तो गुरु बैठा है ना, जिसको नाम दिया उसके अंदर गुरु बैठा है, आत्मा है, गुरु है, परमात्मा है. तो तुमको हाथ जोड़ के राधा स्वामी बोलने में क्या जाता है तुम्हारा, तो मुंडी हिला के जाते हो, तुम लोग बड़े हो बोल के अहंकार करते हो. बहुत गुस्सा किया नायर को इन लोग को, बोला देखो आज से हाथ पहले उठाना चाहिए आश्रम में, नहीं तो आश्रम में रहने का अधिकार नहीं. So even Somnath Babaji noticed this, and a couple of times he mentioned this to them, but this still continued. So once in his satsang, he called out their names and he addressed them in a full satsang, and he told them that what do you think of yourselves, and why aren't you doing this? I mean, do you consider it an insult or something? Because whoever is doing salutations, they're saluting you, they're with folded hands saying Radha Swami. They also have their master within them, their guru is sitting inside, their soul is there, God Almighty is sitting there. So you feel it is below your dignity to with folded hands say Radha Swami. So if you people are going to behave like this, then there is no point of you staying in the ashram. You don't come to the ashram. तो कहते दीनता नम्रता भक्ति का मुख्य अंग है. अगर हम सच्चे दिल से भजन सुमरन करेंगे तो हमारे अंदर पहले दीनता नम्रता ही पैदा होती है. So therefore, devotion and politeness is a very essence of humility, and politeness is the very essence of devotion. When we do our bhajan simran, that is the first characteristic that we will develop within ourselves. दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कह कबीर तेई बड़ा जामे बड़ा सुभाव, जामे बड़ा सुभाव. तो वही कबीर साहब कहते हैं, हाँ दीन गरीबी बंदगी, हाँ सबसे आदर भाव. कहते जिनके अंदर दीनता नम्रता दीन गरीबी माने और ये भावना लेके जैसे भक्ति के मार्ग में चलते हैं, बंदगी करते हैं, हाँ तो कहते हैं कि उनकी भक्ति गुरु को और मालिक को मंजूर होती है. और क्योंकि दीनता नम्रता का अंग है ये, कबीर साहब ने
दीनता के ऊपर इतनी वाणी लिखने का मतलब ही है कि ये भक्ति का मुख्य अंग है। So Kabir Sahib says that those who do their devotion with humility and politeness, they will get the pleasure of God Almighty. He is always happy with anyone who shows humility, who shows politeness. And the reason for Kabir Sahib writing a full Bani on this is to show the importance of humility as a part of devotion. It is such an important trait of devotion that he has written a full Bani on it. दीनता नम्रता हमें मालिक और गुरु के समीप लेके जाती है और अहंकार हमें मालिक और गुरु और भक्ति से दूर करता है और इसीलिए दीनता नम्रता को मुख्य संतों ने रखे और वो इस स्टेज तक पहुंचे होते हैं। So he says that humility and being polite, these are traits that take us closer to our master. And ego, it takes us away, takes us further, arrogance or ego takes us away from the masters and away from this path. So masters always hold very steadfast to humility, and that is how they have gone and they have manifested God Almighty. और सबको आदर भाव, एक सबको आदर इज्जत देना, जो भी अपने पास अपने घर में आ गया मेहमान सत्संगी रहे, कोई भी हो अपना हो या पराया सत्संगी रहे, अगर अपने घर में आता है तो गुरु आ गया बोल के उसको भावना से उसकी सेवा करो। तो आपकी भावना जैसी है आपको वैसा ही मिलता है। The other important thing is respect. We have to respect others, and when satsangis come and visit us, whoever is the satsangi, we should have and we should show respect. We should treat as if the master has come to visit us, and it is as per our own behavior that we will be getting the grace of our Sadguru accordingly. तो इस भावना को लेकर हम संगत के साथ व्यवहार करते हैं तो गुरु खुश होता है और हमारी भक्ति आगे बढ़ती है और हमारी भक्ति आगे बढ़ती है तो वो दरवाजा भी खुल जाता है। When we do this, the master also becomes happy as a result of our humility and politeness and the way we show respect to others. And when he sees all of this, the hand of his grace is also upon us. The inner door also opens faster. नहीं दीन नहीं दीनता संत नहीं मेहमान नहीं दीन नहीं दीनता संत नहीं मेहमान तागर जब डेरा किया जीवत भयामसान जीवत भयामसान। तो वही कबीर साहब कहते हैं जिसके अंदर न दीन है, गरीबी नहीं है और दीन का नम्रता नहीं है, हम कहते हैं कि ऐसा परिवार चाहे करोड़पति हो, अगर उसके घर में किसी का आदर भाव नहीं है तो कहते हैं कि वो जीवत भया मसान, तो उसका घर ही एक मसान के बराबर। Kabir Sahib says that if in a family or a person there is no humility and there is no respect for others, even if he is a rich person or has high status, but he does not have that humility and he does not respect others, then his house or that family is as good as a graveyard. क्योंकि कहते हैं कि संत देखो उनके अंदर गरीबी में रहे, अमीरी में रहे, सेवा भाव होता है, वो गरीबों को भी मदद देते हैं, जिसका कुछ तकलीफ मुसीबत वाले को भी मदद देते हैं। हम देखते थे हमारे आंध्रा वाले ग्रुप में 1-2
परिवार बहुत गरीब था, बीड़ी बना के गुजारा करते थे। तो बाबा जी उसको अलग से बुला के और उसको पैकेट में कुछ रुपए दे के जाते थे हर साल, क्योंकि वो लड़का पढ़ता था, उसको पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं, और बीड़ी बना के कुटुंब जीता था। तो देखो आज वही लड़का प्रेम तो बाबा जी हमेशा उसको पैसा देते थे। तो ऐसे ऐसे भी लोगों को ये करते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं। संत किसी की पढ़ाई के लिए और किसी की और कोई शादी ब्याह में चलो मदद दे दिया, और किसी का कोई रुका हुआ काम है ये कर दिया। तो ऐसा भी वो अंदर अंदर करते रहते हैं। तो खाली अपना स्वार्थ लेके नहीं घूमते, खाली हम अपना स्वार्थ ही अपने कुटुंब परिवार तक ही सीमित रहे। तो कहते हैं भाई अपने कुटुंब परिवार तक तो पक्षियां भी अपना पेट पाल लेते, अपने बाल बच्चे को पाल लेते, जानवर भी अपना पेट पाल लेते, अपने बच्चे को पाल लेते। हम लोग भगत इंसान हो के अगर एक दूसरे के प्रति कुछ सेवा भावना नहीं रखेंगे तो इंसानियत नहीं गई क्या। So he says that even saints, they have seen poverty, they have seen riches, and they have always extended a helping hand to people in the Sangat and outside who come to them. There may be people who are poor who get help from the saints, and there may also be people who are in need at a particular time and they also get help. I remember Sanji used to give help financially. One family from Andhra, they would come along in the program. They used to make their livelihood by making BDs, and that was not enough for them to meet both ends. So whenever they would go and meet Sanji, he would always take them aside, and then in an envelope he would give them some money for their sustenance. So like that, the saints always help others besides just taking care of themselves, they are also taking care of others. If we should also extend help to others who come by and seek help from us, because if we are only living for our family, and if only the survival of the family matters, then that is also being done by animals. Birds also take care of only their young ones, and animals also take care of them. There is no difference. We have to therefore extend beyond our family and extend a helping hand to whoever seeks that help from us. हाँ, तो चाहिए अपने दसों माहों की कमाई कुछ परोपकार परमात्मा में भी खर्च करें, जिससे हमारा तन सार्थक हो। So our honest livelihood that we earn should also be extended to people who are needy, and that way it will help us in our spirituality also. कबीर नवे सो आप को, पर को नवे न कोई। कबीर नवे सो आप को, पर को नवे न कोई। गालत राजू तो लिए नवे सो भारी, कि भाई जो अपना सिर झुकाते हो, किसी के आगे दीनता नम्रता करके सिर झुकाते हो, तो कबीर नवे तो आपको, आप अपने आप को दीनता नम्रता पैदा कर रहे हो, दूसरे को नहीं। तो वो आपका भला हो रहा है। जो किसी के आगे दीनता नम्रता से सिर झुकाता है तो उसमें उसका ही भला है, झुकाने वाले का, उसका कुछ नहीं है। अगर वो जवाब देता है ठीक है, नहीं देता है ठीक है, लेकिन आप अपना ड्यूटी बजा। तो कहते हैं जैसे घाल तराजू तौलिए नवे तो भारी हो। तो कहते हैं जैसे भरा हुआ तराजू एक तरफ भाग रखते, एक तरफ अनाज रखते,
तो जो नीचे जाएगा वही बड़ा होगा। तो ऐसे जो झुकता है तो वही आगे जाके बड़ा होता है। So Kabir Sahib says that when you bow your head down to show your humility or to greet someone, when you bow your head down, it is not that you are doing it for the benefit of the other. Actually, you are doing a benefit to yourself because you are bringing about that humility within yourself, which is required by you. He says that if you look at a weighing scale, the scale which goes down is the heavier one. That is what is really has value, and that is why it's going down. So, like that, when we bow our head, it is akin to the weighing scale going down, and we are doing ourselves a service. आपा मेरे पीऊ मेरे पीऊ मेरा समाय आपा मेरे पीऊ मिले पीऊ मेरा समाय अकत कहानी प्रेम की कहे तो को पतियाए कहे तो को पतियाए। तो कहते जो आपा खो के दीनता नम्रता लेके परमार्थ के रास्ते पे चलता है, वो परमात्मा हमेशा उसके साथ रहता है। तो कहते हैं कि ये बात अगर किसी से कही जाए तो कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन ये सच है। Kabir Sahib says that those who shed off their ego and with humility do their devotion, then God Almighty is always with them. He says that this is, I'm saying this and people don't believe this, but this is the truth. क्योंकि जो मन के दायरे में भक्ति करते हैं, प्राणायाम, आसन, योग, जप, तप, ये हड्डी होते हैं, अपने मन के दायरे में करते हैं, तो इनमें दीनता नम्रता आने का सवाल ही नहीं होता, अहंकार आता है, और अहंकार ही उनके विनाश का कारण बनता है। वो अपने कमाई को किसी को आशीर्वाद, किसी के श्राप देने में बर्बाद कर जाते हैं। Those who do austerities or pranayams and they get mystical powers, they are all doing this under the realm of the mind. And under the realm of the mind, they are only building up on their ego. People who do these practices are also following their ego, and they are under the realm of their mind. So eventually they lose the mystical powers that they gain and the benefit that they get from the practices by either cursing some people or giving a boon to some people as a extension of their ego to basically appease someone or to curse someone. And that is what causes the destruction of the hard work that they have done. तो इसलिए भक्ति जो है वो हमें हमेशा दीनता नम्रता सिखाती है, दीनता नम्रता में चलना सिखाती है, लेकिन और सिद्धांत तो कोई अलग ही है। So the path of devotion always teaches us to have humility and go about our life in humility. Other practices talk about different things. They do not insist on humility. देखो वाल्मीकि रामायण में राम पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले सतयुग में वाल्मीकि ने लिख के रख दिया। उसमें लिखा था पंपापति सरोवर पे जो ऋषि मुनि भजन बैठेंगे, राम आएंगे, सबको दर्शन देंगे। तो उसमें सेवरी भी थी। तो जो कहते सेवरी के अंदर दीनता नम्रता था, प्रेम था, और ऋषियों मुनियों के अंदर अहंकार था। तो राम कहाँ गए? सेवरी की चौपड़ी में गए। When Valmiki wrote the Ramayana, he wrote it 10,000 years before the birth of Ramayana. He wrote it in the Satyug. And as a result of that, expecting
where Rama was going to be coming at Pampavati Sarovar, which was written in the Ramayana. All the rishis munis settled there so that they could get his darshan. But they were all lost in their ego, and finally Shabri, who was staying there with all humility, she got the grace and darshan of Ram. शिवरी के अंदर सच्चा प्रेम दीनता नम्रता था। जहाँ प्रेम सच्चा होता है, दीनता नम्रता होती है, वहाँ सेवा भाव भी होता है। So she had true love for Ram, and wherever there is true love, there is also humility and politeness. शिवरी का प्रेम कैसा था? राम 3 दिन रहे और फिर चौथे दिन जब जाने की इच्छा जाहिर की और शिवरी माता से आज्ञा मांगा, तो शिवरी ने उनको रोक तो नहीं सकी। आज्ञा तो दे दिया, लेकिन वियोग सहन नहीं हुआ। राम जैसे ही झोपड़ी से कदम बाहर रखे और शिवरी गिर के प्राण त्याग। She had so much love for Lord Ram that when he stayed in her house for 3 days, and the time came for him to depart, and he sought her permission to depart, she could not refuse that. She had to accept his request. But she had so much love for him that the moment he stepped out of her heart, she gave up her life and she died. तो वो प्रेम, वो भक्ति देख के ही राम जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि 10,000 जो 10,000 वर्ष से भी वजन बैठे थे उनके पास नहीं गए और एक नीच जात विलगी कर गए और उसके झूठे प्रेम किए। So seeing her love only, Lord Ram went to her and he did not go to other sages and munis who were sitting there on the same banks, who had built up their tents for the last 10,000 years. But he, instead of going to their place and accepting their hospitality, he chose to go to Shabri and eat the berries that she offered him. तो ये कहते हैं कि इस तरह से जिनके अंदर दीनता नम्रता लेके जो भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, वो मालिक उनके साथ हमेशा रहता है। So therefore, whoever treads this path with humility and politeness, God Almighty is always with such people. ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए। नीचा हो ऐसा पार पीवे, ऊंचा प्यासा जाए, ऊंचा प्यासा जाए। तो एक कबीर साहब जी कहते हैं कि ऊंचाई पे पानी नहीं रुकता है, पानी हमेशा नीचा स्थान देख के रुक जाता है। तो कहते हैं ऐसा ही है जो क्या किया गया, नीचा होए सो बाहर पीवे, ऊंचा पैसा जाए। हाँ, कहते जो नीचा होके चलता है वो तो भर पीता है, नीचे पानी रहता है, लेकिन जो ऊंचा बन के चलता है ऊपर पानी नहीं रहता है, वो प्यासा मरता है। So Kabir Sahib says that it's just like the flow of water. It doesn't stand at the height. It always flows to the lower heights. So those who who stay humble and who are at the lower end of it, they will always have enough water to drink. And those who walk tall or walk high in their ego, they will always remain thirsty. They will not get water. तो कबीर साहब बहुत तरह के उदाहरण दे के समझा के अलग अलग तरीके से हमारे भ्रम को दूर करने की कोशिश किया है कि हम भी दीनता नम्रता लेके भक्ति के रास्ते पे चले, जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़े। So Kabir Sahib has also given different examples so that we understand the message he is trying to give, which is that we should do our devotion with humility and politeness and move on this path. अपने मन की सफाई करें और सच्चा हम कहते हैं कि गुरु से सच्चे
प्रेम प्यार माने मन से प्रेम प्यार करें तो हमारा कामयाबी में कोई देरी नहीं होती. So we have that, we keep that humility and go about our devotion. We have true love and affection for the Master and humility for the Master, and we do our devotion, then we will not take long to get success on this path. नीचे नीचे सब तरे देते बहुत दीन नीचे नीचे सब तरे देते बहुत दीन चढ़ी मोहित विमान की बूढ़े ऊंच कुलीना बूढ़े ऊंच कुलीना नीचे 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 सत्तरे देते बहुत अधिक वो चढ़ी मोहित अभिमानी बुरे ऊंचे कुली. हाँ, तो कहते हैं जो नीचे नीचे देवता नम्रता लेके चलते हैं वो सब उद्धार, सबका उद्धार होते गया. जो अहंकार के नशे में मान बढ़ाई लेकर के घूमते हैं वो ऐसे कुलीन किसने बड़े हो छोटे हो राजा हो महाराजा हो उनसे भक्ति नहीं हुआ और वो कहते इस भवसागर में डूब गए. So he says that those who walk this path with humility, they have been able to swim across this ocean of life and death. But those who walk with ego and status, carrying their status like kings or noblemen or others who did not assume the humility, they have not been able to succeed on this path of devotion, and they have gone back and forth in this ocean of life and death. कहते हैं कि काशी नरेश, काशी का राजा प्रेम सिंह कबीर का एक अच्छा शिष्य था. जब कबीर आते तो राजा नीचे बैठता और कबीर को अपने सिंहासन पे ऊपर बिठाता, वो बड़ा इज्जत देता था. Veer Singh, he was the king of Kashi, and he was a disciple of Kabir Sahib. He used to give a lot of importance to Kabir Sahib, and whenever Kabir Sahib would visit him, he would make Kabir Sahib sit on the throne and he would sit below. तो कबीर साहब ने सोचा ये राजा का सच्चा प्रेम है या दिखावा, अब एक दिन परीक्षा लेना. So Kabir Sahib felt that I have to test Veer Singh whether this is just a show that he is putting up or is it real. तो एक दिन उन्होंने एक होली का त्योहार था. तो होली में उत्तर भारत में होली तो बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं. सब जगह जगह भांग घोट के रखते हैं, भांग पी के खूब नशे में रहते हैं और गुलाल अबीर सबसे एकदम भरे रहते हैं पूरा. तो कबीर साहब सोचा कि ये अच्छा टाइम है मेरे सिंह की परीक्षा का. तो उन्होंने रविदास को बुलाया. रविदास समाज थे और एक वेश्या थी, नामी वेश्या बनारस की, जो कबीर की शिष्या हो गई. अभी वो किसी को पता नहीं, नाम दिया था उसने और बड़े अच्छे उसमें परिवर्तन आए थे. तो एक तरफ वेश्या को बुलाया और इधर रविदास को बुलाया और अपना जो है होली का तो त्योहार मना रही है, तो गुलाल और कोई कोई तो कचरा ही फेंक देता है ऊपर गटर का. तो ये रोड से जा रहे थे लोग, चलो कबीर और ऐसा वैसा बोलते थे, कोई कुछ डाले, कोई कलर डाले, कोई ये डाले. So once Kabir Sahib decided to test him, it was the festival of Holi, and this festival of Holi is celebrated in all parts of India, but especially in UP and in the northern part of India. There is it is celebrated by drinking bhang,
which is an intoxicant, and by colors. So people smear each other with colors and they drink bhang. So Kabir Sahib thought that this is a good time to test beer sing, and he called Ravidas, who was his initiate, and Ravidas was a lower caste cobbler, and he was from a low caste, and he also called another initiate of his, which people did not know. It was not known by then that there was a very famous prostitute in Kashi, and she had become an initiate, and a lot of transformation had happened within her. But people did not know that she is an initiate of Kabir Sahib. They only knew her as a prostitute in Kashi. So he was walking along with them, smeared in color, and everyone was saying different things to him, and they were throwing colors. In UP, they also throw the water of gutters to celebrate this. So with color, they throw anything that is filthy as well. So they were throwing all of this at Kabir Sahib and these people who were traveling with him, who were walking with him. Kabir Sahib ने क्या किया? एक हाथ तो रविदास के ऊपर काले पे रखा और एक हाथ तो वेश्या के ऊपर रखा और दोनों हाथों में दोनों बोतल भांग का, उसमें क्या था? कलर शराब जैसा दिखे ऐसा कलर डाला और वो लेके निकल गए रोड पे. So Kabir Sahib walked with one hand on the shoulder of Ravidas on one side and with one hand on the shoulder of the prostitute on the other side. And in both his hands he was carrying colored water which looked like some intoxicant and bhang. और रोड पे निकल गए धीरे धीरे. अब इस हालत में कबीर साहब नामी महात्मा, अब लोग इस हालत में देख के लोग कबीर के पीछे पीछे हर गाली देते हुए कबीर साहब को कि कबीर साहब की बुद्धि मारी गई है, ऐसा कोई भला बुरा कहते लोग आ रहे. राज दरबार के नजदीक गए तो राजसभा चल रहा था. दोपहर को 11:30 बजे का समय था. राजसभा में बैठे थे राजा और सिकंदर लोधी, बड़े बड़े राजा मंत्री बैठ के कुछ बात चल रही थी और इतना हल्ला गुल्ला सुन के लोगों का राजा पूछता है वीर सिंह कि क्या बात है, बाहर हल्ला बहुत हो रहा है. तो कहते महाराज तो राजदूत गए देखा तो कहते कबीर साहब जी आ रहे हैं और इस ढंग से आ रहे हैं, इसलिए ये लोग हल्ला करके पीछे पीछे भागते आ रहे हैं प्रजा. So he was walking like that. Now Kabir Sahib was very well known as a Mahatma. So when everybody saw this this way that he was walking with his hands on the shoulders of these people and with bottles in his hand and with the swagger he was walking. So people also started walking behind and talking all kinds of things, saying that he is a Mahatma, but see what he is doing, etc. So they were all that way. A lot of people had gathered, and there was a lot of noise. And he walked towards the assembly of Bir Singh. And when he reached nearby, there was so much noise outside that Bir Singh inquired what the noise was all about. So his emissaries found out that indeed Kabir Sahib is walking towards the assembly, and there is a big ruckus of all the people talking about all things about Kabir, and they are all coming this way. तो बाद में इस हालत में एकदम सीधा अब राजा के गुरु हमेशा आते थे, द्वारपाल ने दरवाजा खोल दिया और ये अंदर चले गए और जाके राजा के सिंहासन के सामने हाथ ऐसे ही था दोनों के ऊपर, बादल ऐसे ही पकड़े थे और जाके सामने खड़े हो गए. एकदम शरीर काला कलर का, कोई कीचड़ डाला, कोई गोबर डाला है, कोई क्या डाला है, ऐसे ही जाके खड़े हो गए. अब राजा वीर सिंह का मन डोल गया कि आज तो गुरुदेव का मत घूम गया है, शराब भी पी लिया है और एक तरफ वैश्या और एक तरफ वेदास
तो वो भाव आ गया और वो सिंहासन से नीचे नहीं होता। So when he walked in the assembly, nobody stopped Kabir Sahib because they were used to having Kabir Sahib come inside. So nobody stopped him at the door, and they just walked into the assembly. And then Kabir Sahib stood in the assembly with Ravidas on one side and the prostitute on the other, and the bottles in his hand. And he was smeared with color, with cow dung and all kinds of things, and barely recognizable, but he was standing there. Now, Veer Singh sitting on his throne felt, he saw Kabir Sahib in this form, and that shook his faith for a while, and he did not get up from his throne to greet his master. और मन डोल गया, भाव आ गया। तो सिकंदर लोधी कहता, देखा महाराज आपके गुरु की क्या हालत है। तो और भी उनका दिल नाराज हुआ। तो इतने में रविदास कबीर साहब सोचा अब ये तो गिर गए। तो उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ हटाया और दोनों पानी अपने पैरों में, माने वो शराब अपने पैरों पे डाल दिया। तो सिकंदर लोधी कहता है कि महाराज वीर सिंह से, महाराज शराब पीने वाला शराब के पैर पे नहीं डालेगा, फेंकेगा नहीं, और ये शराब पैर पे डाल रहे हैं, ये तो कोई और चीज है, बात और है। उसको शंका हो गया सिकंदर लोधी को। तो वीर सिंह पूछते हैं रविदास से कि महाराज ये क्या बात है। तो रविदास कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में अभी आरती करने के समय कपड़े को आग लग के और मंदिर में आग भड़क गई और कबीर साहब बुझा रहे, ये यहाँ पानी डाल रहे पैर पे, और रविदास कहते वो पानी को उधर जगन्नाथपुरी में मंदिर में आग लगी, वो बुझा रहे हैं कबीर साहब। कहते अरे क्या, एक तो इस तरह का है, दूसरा उस तरह का है, अब जगन्नाथपुरी कहाँ है और ये कहाँ पानी डाल रहे हैं, वहाँ मंदिर में आग बुझा रहे हैं बोलता है। बड़ा आश्चर्य हो गया। तो ये तो लौट गए, कबीर वापस आ गए। लेकिन सिकंदर लोधी कहता नहीं महाराज इसमें कुछ रहस्य है, आप घुड़सवार भेज के पता लगाओ। ऐसा ऐसा टाइम मैंने नोट किया है, इस टाइम पे वहाँ आग लगी थी कि नहीं। तो घुड़सवार भेजे गए उड़ीसा को, जो जाने आने में एक हफ्ता लगा। और जब वो आके कहते हैं कि नहीं बात सच है, उसी समय पे वहाँ पे पुजारी आरती कर रहे थे, कपड़े को आग लग के मंदिर में लग गई और कबीर साहब आके बुझा के गए। आप करें क्या। तब तो वीर सिंह को बहुत तकलीफ हुआ कि मैंने तो उनको इज्जत नहीं दिया, कुछ और सोचा, अब तो अभी कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे लोग भी गिर जाते हैं। So when Veer Singh did not get out of his throne, get up from his throne and offer it to Kabir Sahib as was customary, and that was because he felt a little shaken up by this behavior of Kabir Sahib. And when he did that, he had Sikandar Lodhi who was also visiting him, and Sikandar Lodhi told him that this is your master, but how come he is behaving like this? So is this the kind of master you have? So that further shook up Veer Singh, and they were sitting there. At that time, Kabir Sahib took those two bottles and he poured the contents of that on his feet. When he started pouring that on his feet, Sikandar Lodhi told Veer Singh that this is not the behavior of a drunken person. A person who drinks never pours his own drink like this on his feet. He'll never waste it. So there is something beyond what is meeting our eye here. And so they asked Kabir Sahib as to what is the meaning of this. So Ravidas at that time told Veer Singh that Kabir Sahib is dousing the fire. There is a fire in Jagannath Puri, which is many miles away in Orissa, in another state. There is a big temple of Jagannath Puri, and there was fire in that temple. And Kabir Sahib was dousing that fire, and that is why he was pouring that. So these people felt that it is too much to believe,
because he's putting water on his feet here and he's saying I'm dousing the fire in another state. So they were kind of too shocked. Now Kabir Sahib left from there at that time. And Sikandar Lodi, however, told Veer Singh that this matter needs to be definitely investigated because there is definitely more than meets the eye here. So they sent an emissary to Orissa to check whether this actually happened. And someone went there. It takes a week to travel. So someone went there and checked, and indeed there was a fire in the temple of Jagannath Puri. When the puja was being done, one of the curtains caught fire and there was a big fire in the temple. And they said that Kabir Sahib had come there and was dousing that fire. So this way, even great followers and great disciples also they also get shaken up like this in their devotion and their humility. तो एक कविन साहब जी इशारा देते हैं बोले ऊंचे कुलीन। हाँ तो कहते बड़े बड़े कुलीन भी समय पे ऐसे अभाव काम हुए काम कर जाता है और भक्ति से माने कि अभाव ला देता है, भक्ति से गिर जाते हैं। So Kabir Sahib says that there are times when the devotion of even great disciples is tested, and they also succumb to their ego, and they also get affected. नीचे नीचे